Yeah. And then comes your TEA. TEA is like thermic. Okay, TEA का मैंने बात कर लिया है. TEF, ठीक है. TEF is nothing but thermic effect of food. समझो मैं जो खाना खा रहा हूँ वो बर्न करने के लिए भी मुझे कैलोरीज चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन हैज द हाइएस्ट थर्मिक वैल्यू. To burn proteins, supposingly say I'm taking 25 grams of protein, to make it simple. So 25 grams of protein, that will give me into 4, that's 100 calories. So to burn this 100 calories, to use this, I will have to burn 25% calories उसमें से. In short, 25 calories I'll be burning ये 100 calories of protein में से. Getting it? So in order to use protein, utilize protein also, I will be burning calories. So that is a cue, friends. So if you want to burn more calories, include a lot of protein. More the protein, more your body will use energy in order to just break it down. Carbs को तो break करने के लिए hardly few calories, 6 to 10% होता है, depends on whatever carbs you're taking. And fat के case में it's 2 to 4%. So now you know. In short, हम लोग जो fat पी लेते हैं या फिर bulletproof coffee बोल के जो पी लेते हैं, वो calorie ऐसे ही अपना excess आ जाता है. Your body does not need a lot of energy to break it down. So increase your protein intake. So these are the 4 components that make up your TDE. Okay. So I've covered most of the elements that I've written up. अब अगर हम लोग अगर simplify करेंगे what to do in order to lose weight and what not to do, I would say the concept of eat like a king breakfast, eat like a pauper dinner, वो वाला concept से बाहर आना चाहिए. We need to come out of it, because what happens is an average Indian diet, when you're having few people, they end up consuming more than 4000 calories, because तेल में इतना बनता है, घी होता है, सब होता है, ठीक है. So we are always having lot of calories inside, so we are never in a deficit, so we will never end up losing fat. That is one thing that you need to understand. That is for most of the people. There are other set of people, they end up eating less, ठीक है, कैलोरी बहुत कम होता है, but their only intake is going to be carbs. तो उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्क्रू अप हो जाता है, because they end up losing their muscle mass. So और BMR गिर जाता है. So now when they adapt to it, और खाना कम कर देते हैं तो और लूज हो जाता है, फिर बाद में वो वापस से अडेप्ट हो जाता है. सो इवन इफ यू ड्रिंक वाटर यू विल पुट ऑन वेट, ऐसा हालत हो जाता है. दैट्स नॉट लिटरली याद हो तो या सो दैट इज द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल. हम लोग कम खाने के बावजूद वेट लॉस नहीं हो पाता. दैट इज बिकॉज ऑफ योर मेटाबॉलिज्म, गाइज. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो हाउ डू वी फिक्स दिस अप? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू इंक्लूड प्रोटीन. सो जैसे ही आप उठ जाते हो, the moment you get up from your bed, if you want, you can have water. And yeah, water intake is one thing that you need to take care of. At least 4 to 6 liters of water throughout the whole day is a must. You need to include 4 to 6 liters of water a day. That will ensure that you're full. And in most of the cases, when you're hungry also, or when you're not hungry also, you end up eating. But actually the reality would be different. You're not actually hungry, you're thirsty. And thirst तब हमें फील होता है जब when our throat is dry, when you're going out or something like that. Otherwise we always end up eating. That is one thing that you need to change. So the first change that you need to make is start drinking in water, 4 to 6 liters of water. The moment you feel hungry, पहले पानी पी लो. Gulp in the water. Finish off the water intake. Okay, if you people can take a note of this would be good, because this is the best part. पूरे इसका summary है ये. So the first thing that you can do is gulp in a lot of water. Okay, I mean sip it down if you feel like you need to use the washroom. So you can sip it down. So 4 to 6 liters of water. That's the first and the foremost thing. If again you are hungry, then go with things that do not give you calories. For example, black coffee हो जाएगा, black tea हो जाएगा, green tea हो जाएगा, or else you can go with Diet Coke, Diet Pepsi. Yeah, you can have those. It won't cause you cancers, please. Then third is, अगर आपको फिर भी भूख लगी है, then you can go with greens. Green leafy vegetables ले लो. Like you can have spinach, you can have cabbage, you can have lettuce. That will give you fibers as well, and they will keep you full. Right? So go with all these things.
So these are the three things that you need to ensure first hand. Okay. After this, when you get up in the morning, the first thing that you do is start your day off with some proteins. Proteins will keep you full, satiated, and आपको भूख नहीं लगेगी. So you might not end up cheating throughout the whole day. भूख लगेगी तब तो cheating करेंगे ना, वरना तो हम cheat नहीं करेंगे. So that is a very good technique that you can follow. So in the morning when you get up, start with proteins. So for a vegetarian, you can start with paneer. For a non-vegetarian or for an vegetarian, you can go with eggs. Eggs are good, and non-vegetarians भी egg खा सकते हैं, या फिर they have to got a lot of options. Now if you want to include certain things like दूध अगर ऐड करना है कर लो, बिंदास ऐड कर लो, it is good. It's a good form of calcium as well. All dairy products will give you calcium. So if you want to have milk, have milk. Then add in some nuts. Okay, so nuts, this is one more thing that you need to understand. Nuts are good, but at the same time they're very calorie dense. You just cannot keep munching on nuts. One second. Calorie list. Okay. So you just cannot keep munching on nuts because to make it very simple, 100 gram of peanut or almond, any nuts, I'm just giving you a ballpark figure, will contain approximately around 600 to 800 calories, 100 grams. और 100 ग्राम तो हम लोग ऐसे ही खा लेते चकने की तरफ पे, है ना. अगर समझो मैच चल रहा है आईपीएल में तो हम लोग तो ऐसे ही खा लेंगे पीनट. सो दैट इज अगेन बैड. सो 600 to 800 कैलोरीज, दैट्स लाइक ऑलमोस्ट 2 टाइम का मील का कैलोरी हो गया वो तो, व्हेन यू आर ऑन कट ऑफ कोर्स. सो दैट इज वन थिंग. सो दैट वाज येट अनदर थिंग टू स्टार्ट ऑफ योर डे विद प्रोटीन्स. उसके बाद व्हेन यू गो हेड, 11 बजे के टाइम पे जब आपको भूख लग रही है, हैव वाटर और ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी. देन एट अराउंड 1 or 2 हैव योर लंच. सो लंच में व्हाट डू यू नीड टू इंक्लूड? आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल टू कट डाउन ऑन थिंग्स दैट यू लाइक. बेसिकली सारे अपने इंडियन पीपल जो होते हैं, व्हाट दे डू इज लाइक यू नो, दे वांट टू हैव थिंग्स दैट आर मेड बैक एट देयर होम. घर पे जो बना है वही खाना है. बिकॉज सिंपली द रीजन बीइंग, यू नो, सबके साथ जैसे खाना है, अलग सा टाइम नहीं निकालना है. I do understand it becomes very tedious, and tracking calories is also very tedious because उतना time तो होता नहीं है हमारे पास. So hence this approach, right? This, of course, this will give you results, but this is not the ideal approach. Ideal would be tracking, but अगर आपसे नहीं हो रहा है तो please do not. It's okay. So you can just follow all these techniques that I'm saying. Sujit, I will talk about growing muscles and periodization in some other. No, it doesn't suit my audience. So I will talk about it in a different section, right? So yeah, thank you. So so lunch mein what you can do is, again, the first thing to include is proteins. Proteins आप include कर लो. First finish off your protein intake, then have your carbs. ठीक है, any which ways we are going to be having carbs throughout the whole day. ठीक है, so have your carbs. So your focus should be, primary focus should be, प्रोटीन आपका मुट्ठी भर आ जाना चाहिए. ठीक है, इफ योर प्रोटीन साइज इज लाइक मुट्ठी भर अगर आ गया तो यू आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एज आई सेड, यू नो, you need to match up to 1.2 grams of protein per your body weight. So 1.2 to 1.6 भी अच्छा है. 1.6 is a very good figure. So मुट्ठी भर अगर प्रोटीन अगर आप खा रहे हो तो good enough. And for carbs, मुट्ठी भर से थोड़ा ज़्यादा. So this much. But उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे भर भर के खा लो. Learn the subtle art of sharing with others. If you have a big pizza that you are sharing, that you're eating, share it with your friends, share it with your family. तो उससे क्या हो जाएगा, अगर आप चीट कर भी रहे हो, पिज़्ज़ा का स्लाइस है, इट्स लाइक वेरी हैवी ऑन कैलोरी, सो यू आर ब्रेकिंग डाउन ऑन कैलोरीज. फॉर एग्जाम्पल, one whole 10 inches pizza, cheese burst pizza will be around 3000 calories, maybe more than that. So if you're making 6 slices, so that's like 500 calories. फाइन. एक स्लाइस खा लो, मॉडरेशन सीख लो. अगर तो भी थोड़े दानी बनो, थोड़े दे दो किसी को, तो दैट विल हेल्प यू टू कट डाउन ऑन द एक्स्ट्रा कैलोरीज, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. कटिंग डाउन ऑन कैलोरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक इट नोट. उसका मतलब ये नहीं है कि लीव आउट ऑल द थिंग्स दैट यू लाइक और लव. ठीक है. सो सेकेंड थिंग वुड बी, हैव योर राइस, दैट विल मेक इट सस्टेनेबल, एंड ऑल्सो इंक्लूड दाल, include lentils, all the lentils that you like. If you're a non-vegetarian, have non-veg. Non-veg will not make you fat. In fact, you need all that proteins. Non-veg is the best source of protein. In fact, chickens, they are the best source of proteins.
that one can get. For a vegetarian, you can include paneer, you can include soya chunks. Soya chunks are very high on proteins. You can include dals. Then there are a lot of, you can include rajma, you can include chickpeas. There are a lot of varieties for vegetarians as well. If you're an vegetarian, have eggs. तो ensure that आप lunch में भी, dinner में भी and breakfast में भी include कर रहे हो protein. And if you're a vegetarian, what you can do is, एक 4 बजे के टाइम पे when you are having tea, if say you are a person who have around 4 to 5 teas a day, cut down on that. हो सकता है तो 2 पे एडजस्ट कर लो, या फिर इफ यू कैन नॉट डू दैट, स्टार्ट यूजिंग स्टीविया. स्टीविया इज बेनिफिशियल बिकॉज आप जैसे ही 1 टेबल स्पून शुगर यूज करते हो, दैट्स लाइक 15 ग्राम्स ऑफ शुगर, दैट्स 15 ग्राम्स ऑफ शुगर एंड 60 कैलोरीज. 10 बार अगर यूज कर रहे हो तो 600 कैलोरी ऐसे ही हो गए. गेटिंग इट? सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट, व्हाट यू कैन डू इज स्टीविया यूज कर लो. इट वुड बी बेस्ट. यू आर कटिंग डाउन ऑन 60 कैलोरीज, राइट? एंड दूध अगर यूज करना है यूज कर लो. व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट टी ड्रिंकर, 1 या 2 चम्मच यूज करो टी में, तो थोड़ा कट डाउन हो जाएगा. डज इट नॉट इंक्रीज क्रेविंग? वेल, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सम पीपल कैन नॉट adhere to the diet or do something without having sugars. उनका क्रेविंग ज़्यादा होता है. So such kind of people can do this, limit themselves, which is the good brand of stevia, whatever you can find. अभी एक संजीव कपूर का भी आया हुआ है, so that is also good. Sugar free का stevia, that is also good. Okay, you can शुगर फ्री में टाइप्स आता है. 1 तो पाउडर वाला भी आता है एंड 1 यू गेट द टैबलेट वाला भी. सो यू कैन check it out, or else you can go with a drop as well. So you can check out what suits you better if you're finding it bitter. Okay, so coming back, so again आपका जो टी का जो टाइम हो गया, वहां पे भी आप एडजस्ट कर रहे हो, कटिंग डाउन ऑन योर कैलोरीज. नाउ फॉर योर स्नैक्स के तौर पे, if you want to have snack, have some healthy snacks. For example, greens तो मैंने खाने के लिए बोला ही है, तो थोड़ा greens खा लो, ठीक है. Along with that, what you can do is you can roast some soya chunks, put it in that, या फिर थोड़ा chickpea को ये कर लो. Have a smoothie, make a smoothie out of it. That would be better. Include things that will give you protein along with carbs and fats, ठीक है. And then towards your night, what you can do is again मुट्ठी भर प्रोटीन लेना आपको, so that you can increase again your protein intake and then carbs. And I wouldn't say कि अगर आपको चपाती खाना है तो चपाती खा लो, अगर आपको राइस खाना है तो राइस खा लो. Please do not cut down on things that you love, because it's a matter of sustainability.